Audio check, audio check, audio check, audio check. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Right, baby. Namaste. So it's Retvi Sheena. I'm welcome. Firstly, uh, how do I pronounce your first name? Is it Retvi or Sheena? Where are you joining us from? Can you hear me? Audio check. Audio check. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Am I audible? Audio check. Audio check. Audio check. Revati. Namaste, Revati. A very warm welcome. Where are you from? Do you invest? Do you trade? You're from Delhi. Okay, perfect. Namaste, Satyanji. Very warm welcome. So, how long have you been investing, Revati? Hello, Yash. Good to see you. Namaste. Welcome. On and off. It's been 4 years. Wonderful. So, I think this is the place to have a sensible view in the markets. I am no influencer. I don't have magic tricks to convert 5,000 rupees into 5 lakh crores. I don't do options. So only the sensible and the right way of investing is discussed here. And that's the only way forward. बाकी आपने जो सुना हो
यूट्यूब पर और दुनिया भर पर, वो सब बेकार और गलत है. You started investing in mutuals. Wonderful, wonderful. That's excellent. Okay, Satyenji, firstly, Revati is new, so warm welcome. Normally, we start with the Nifty. So, good things are happening. I was hoping that 24,200 would come tomorrow, yesterday, but yesterday there was a fall in the Kospi, तो नहीं हो पाया, लेकिन सबकी कसर आज निकल गई. हाँ सैयद जी, नमस्ते. Greetings, greetings. Warm welcome from Delhi to the person in Hyderabad. ये रैली कल होनी थी लेकिन हुई आज, and this is despite oil up. तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको बाजार में दिख रहा है. यहां से यहां हम लोगों ने 500 पॉइंट कवर कर लिए हैं 4 ट्रेडिंग सेशंस में. और अब जो बहुत बढ़िया बात है वो है ये जो 8 जुलाई का जो एक सिंगल बार था, इसके अंदर बाजार घूम रहा है. आई थिंक दिस शुड बी टेकन आउट टुमारो. नमस्ते मिस्टर जगमोहन. एंड दिस इज द मोस्ट एक्सीलेंट चार्ट. ये देखिए, ये बाय ट्रिगर हुआ है आज. दिस इज 24 234 प्लस 40 74 पर. सो 24 274 275 a buy call will be triggered, which it has. So let's see what happens tomorrow. ये थोड़ा थोड़ा इधर इधर जाएगा, इससे सपोर्ट लेगा और फिर और ऊपर बढ़ेगा. So this is the Nifty for you. I'll switch back to daily and I want you to see the IT chart also. ये देखिए, यहाँ पे भी एक बहुत जबरदस्त बाय आया हुआ है. ये निफ्टी का डेली चार्ट है. इसके ऊपर which is 24283 is the high, so 24,320 the buy will be triggered, which will be a high of this one. Chalo, let's hope for tomorrow. IT is in good shape. This sell has been negated. This is a very very big plus. यहाँ पे देखें 75 पे क्या हो रहा था. वेरी सिंपल चार्ट एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. ये देखिए, यहाँ पे भी बाय आया हुआ है, तो इट्स अ टर्बो बाय with a ATM tick. This is very very strong. Let's hope for the best here. ओके, मैं देखता हूँ मेरे पास IT इंडेक्स है क्या यहाँ पे. सेलेक्ट. ओके, निफ्टी एंड डिबेट, निफ्टी IT देखें. Let me just try my luck. नमस्ते निपुंजी, वेरी वार्म वेलकम. आज का हीरो, कई दिन का हीरो एक्चुअली. So this is the IT index, ladies and gentlemen. What a beautiful chart.
ये 1 जुलाई से अब तक की कहानी है, और 4 दिन ये एक बाय आया था, इट गॉट ट्रिगर्ड ओवर दिस टारगेट. So we are seeing 32,000. So this is what we are heading at as far as IT is concerned, and this is the reason why the Nifty is in strength. ठीक है, ये निफ्टी आईटी और निफ्टी हो गया. दिस इज रियली गुड. और जो 2-3 जगह तेजी आ रही है वो है निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर. और आज की रैली के बाद मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंडस्ट्रीज बहुत मजबूत हो गए हैं. ओके, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, मिड एंड स्मॉल 400 इक्वल वेट. ये मैं लिख लेता हूँ, मेरे कल भी काम आ जाएगा. So this is 29, so this is 37, 26. Oh, ACM. Okay, or so in strength are Nifty, consumer durables, mid small 400, healthcare, AQL 30. ये जो हैं ये सारे इंडिसेस बहुत मजबूत हैं. एक चीज मैं और करके देखता हूँ कहीं आज क्रॉसओवर हुआ है क्या. और एक मिनट रुकिए. ओके, so this is the IT rally. ये IT index and 75-minute charts. You can see just a gap up और फिर sideways, gap up, sideways, gap up, sideways. इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. There's a beautiful color representation. ये देखिए. Now it's in green territory, which itself means strength. और ये sell negate हुआ है, which is a big plus. Okay, more strength, more strength. So IT is in super top shape. All dips have to be purchased. Okay. अच्छा जी, कौन कौन से स्टॉक्स बहुत मजबूत हैं हमें करना है. ओके, ये इंडेक्सेस हो गए.
और आज मेरे को आपको दिखाना है एक बहुत ही मेजर स्टॉक जहां पर बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम आया है, वो देख लेते हैं यहाँ पर। ये है पारादीप फॉस्फेट्स। इसमें सत्यन जी, दिस इज ऑफ गुड इंटरेस्ट टू यू। नमस्ते नैना जी, वेरी वार्म वेलकम। ये देखिए पारादीप, दिस इज 156, 12.5% हायर। 70 गुना 5 डे एवरेज है, एंड दिस इज एन ऑल टाइम हाई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम कभी इस काउंटर में हुआ ही नहीं। हाउ डू वी चेक दैट? आ पारादीप फॉस्फेट से खुला हुआ है। गुड 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 गुड। ये देखिए सत्यन जी, कैन यू सी दिस बार? So this is the highest volume ever, and you can just see it this way. ये मई 2022 में लॉन्च हुआ था आईपीओ 42 रुपीज का, और उस दिन की वॉल्यूम और आज की वॉल्यूम उससे ज्यादा है। So this is a major change in sentiment. सत्यन जी, आर यू देयर? क्योंकि आपको अर्निंग्स ट्रैक करना बड़ा अच्छा लगता है। Okay, so highest ever volume. This comes on earnings day. देखिए अर्निंग्स पे एक दिन पहले भी, एक क्वार्टर पहले भी हलवा जलवा हुआ था खूब। यस, सो नाउ गो इनटू द अर्निंग्स, and this is how rallies start. Whether they will start in Paradeep or not, I don't know, but I would be very hopeful. ये देखिए 36% rise in sales, 19% rise in profit, और सबसे कमाल की बात है ये हिमांशु बट्स, टेलीग्राम लिंक फॉर योर अपडेट्स प्लीज सर। हिमांशु जी, मैं ज्यादा टेलीग्राम पे एक्टिव हूँ नहीं। वो जो मेरा ग्रुप है वहां पे सब लोग सोते रहते हैं। आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ वेक देम अप। आई एम मोस्टली एक्टिव ऑन ट्विटर एंड ऑल। सो लुक एट दिस Satyan ji, revenue is more than sales in a company where profit and revenue is more than market capitalization, where sales and profit are growing. EBIT margin is also increasing in the last 5 years. ये देखिए 8 हो गई, नेट मार्जिन बढ़ गई है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लुक एट दिस, लेट्स सी अ 3-year प्राइस। ये देखिए 3 साल का जो पीई है वो अपने एवरेज से कम चल रहा है। प्राइस टू बुक
3 साल का अपने प्राइस से कम चल रहा है एवरेज से. So these are the things that you need to notice. And is it a good stock? Are funds interested? Yes, they are. निपन ने स्टेक बढ़ाया है, एसबीआई ने कम किया है, आईसीआईसीआई प्रू ने बढ़ाया है, बंधन ने डबल किया है स्टेक, चलो 70% बढ़ाया है, इन्वेस्को हैज कम इन. दिस इज ऑल जून डेटा. So these are the pointers of a good rally in the making. Will it happen? I don't know. But if I were you, I would track Paradeep Phosphates. तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर वॉल्यूम होता है, गुड अर्निंग्स followed by fund action, or any one of the two, any two out of the three. So please keep an eye out on Paradeep. That's a major development. Keep an eye out on IT. And some time ago, looks like a great stock. I don't know, but these are good things to notice. Now, Steel Authority has also started to rally after results. Look at this. ये एक दिन पहले अर्निंग आई है, बस अभी रैली शुरू हुई है इसमें. So these are all very, very good points to note. So I am in the business of a very thankless and boring job. I buy the dip in quality stocks, and those stocks are filtered on earnings, con call details, volume, and of course म्यूचुअल फंड डेटा. अब ये ब्लू चिप है, इसमें ज्यादा एक्शन ढूंढना मुश्किल है. इन टर्म्स ऑफ फंड पिक्चर इसका बहुत कम बदलता है, बट that's the way to look at it. Nifty is done. What else did I promise? हाँ, फर्टिलाइजर हो गया, सॉफ्टवेयर स्टॉक. हाँ, मेरे ख्याल से आपको मैं एक दो रैलीज दिखा देता हूं जो सॉफ्टवेयर पर बन रही हैं. दैट विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू. लेट्स लुक एट Infosys and Tech Mahindra. These two stocks are doing very well. ये देखिए, okay, let's look at Infosys first. इसको भी मैं डेली कर देता हूँ. ये देख. So Infosys, the rally hasn't started much, but you have a
higher bottom. That's a very, very big plus. Let us see what are the possibilities. How interesting. 1188. Okay. Let's look at Tech Mahindra. ये देखिए इसका डबल बॉटम डबल टॉप निकाल लिया गया. That's a very big plus. Let's look at the weekly chart. ये देखिए this cell has been taken out. अभी ये ब्लू होना जरूरी है. देखते हैं क्या होता है. But this is how the rally is building up. पिछले साल मैंने पिछले हफ्ते मैंने TCS में बहुत काम किया था. That turned out to be a great. हाँ आइए दीदी. हाँ दीदी मेरे को पानी और पिला दीजिए ठंडा. ये देखिए TCS का ये वीकली चार्ट है. लाइफ अबव द ब्लू लाइन. दिस इज वेरी वेरी गुड. डेली चार्ट में क्या है ये देखिए. वो 4 दिन की रैली है. दैट्स वेरी नाइस. इसमें आपको और इस सॉफ्टवेयर की पावर पता चलेगी. ये देखिए so it's crossed all targets. How interesting. Let's see where it's headed. So 2500 is coming. Let's see when. सॉफ्टवेयर भी हो गया. अब मेरे को आपको एक और अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी. कैन वी सून सी और यू विल सी वीकनेस. सैयद जी बैंक निफ्टी में ना कुछ हो नहीं रहा है. यू विल जस्ट रियलाइज इट हियर. सी ये देखिए इट्स अंडर परफॉर्मिंग. व्हाट आर दिस सॉफ्टवेयर चार्जेस. 10 लाख रुपीज अ ईयर. ये देखिए सैयद जी जैसे निफ्टी इस लाइन के ऊपर है. बैंक निफ्टी स्टिल डाउन. स्टिल रेंज बाउंड. कुछ नहीं हो रहा है इसमें. लेट्स लुक एट द 75 मिनट चार्ट. व्हाट इज इट डूइंग. ये देखिए. So a buy has been triggered on the 75-minute chart. So this is the high is 57315 57415 आ चुका क्या. 415 पे this will be a buy. This is a good development. Actually, the most interesting candle is the 2-hour candle. Let's see if I can able to make it or not. Bank Nifty में अभी strength is a bit away, but smaller charts are showing strength. See? 75 में the candle is blue. That means the internals are changing. TBO Tech के तो अभी earnings आए हैं 1 मिनट पहले.
138 versus 74. Margin is a bit higher. Revenue 926 crores versus 510. Net profit 84 crores versus 63. Obviously, this will rally. Let's see TBO Tech. Yeah, it'll rally sharply tomorrow. Price to book 10x. Baapre. Beyond expensive. ओके आईपीओ प्राइस के आसपास ही मिल रही है. ठीक है. These are good earnings. Who had asked the question on TBO Tech? नहीं सर, ये एफएनओ का ही काम करता है. Doesn't do cash. अच्छा, मेरे को आपको एक और फंड बताना है which should be on your radar. एक ETF और एक fund. So we'll do BOI FlexiCap. The fund manager was with us today. The CIO, Mr. Alok Singh. उनसे बड़ी अच्छी बात हुई. A very, very good fund. इसका बस आप रिटर्न स्ट्रक्चर देख लीजिए. ये जनवरी 2020 में लॉन्च हुआ था और तब से हर साल ये 26%, 25% कंपाउंड कर रहा है. ये नियर टर्म बिल्कुल छोड़ दीजिए. ये देखिए बस हाउ इट परफॉर्म्स इन द लॉन्गर टर्म. एक साल में 4 आउट ऑफ 68, 3 आउट ऑफ 53 इन 3 years, 5 आउट ऑफ 39. सैयद जी खत्म हो गया कॉस्ट पे. फुस हो गया.
तो सो रेवती, अगर आपके पास कोई फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, देन दिस इज अ वेरी गुड फंड टू ओन। इसमें ये देखिए, सत्यन जी, जब हम लोग बीओआई का टोटल बीओआई म्यूचुअल फंड का टोटल पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं, तो जो इनके और भी फंड्स और स्टॉक स्कीम्स हैं, उसमें क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज द टॉप होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इसमें नंबर 4 पे है। लेकिन इफ यू लुक एट द टॉप होल्डिंग ऑफ बीओआई म्यूचुअल फंड एएमसी, then quality power electrical equipments is the top holding. So you have to keep this stock also on your radar. So, ladies and gentlemen, that's how you pick out stocks, either based on fund holdings in terms of strength, or whatever is the top holding of a good fund, and then track that stock on earnings. And whenever there is an explosion, let's look at quality, you tail it. You missed the name. Okay, it's BOI. You have, then it's enough. Don't take another one. It's fine. So, Satyanji, they are in the business of transformers. Debt-free company hai. Let's look at sales. See, March over December, it's a win. December over September, higher. September over June, higher. June over March, higher. You see sequential growth. 2 years ago in March, it was at 40 crores. Now it's at 281 crores. 2 years ago, the profit was 18. Now it's 51. So if you are able to catch these potential gainers or at least growth stocks, then you have it good. It just takes a little bit of research, obviously a lot of patience and lots of hard work to find out 2 or 3 stocks every quarter. और बस अपने को वही करना है। आप 5 ऐसे स्टॉक ढूंढ लीजिए, 5 में पोजीशन ले लीजिए, 3 चल जाएंगे, 1 में नुकसान होगा, 1 बराबर का छूट जाएगा। On a net level, you will be richer in your brain. You will be reading more about good quality stocks, and you'll also be tracking good funds. Yes, exactly. Amazing numbers. So that's the broader structure, ladies and gentlemen. A good fertilizer stock where breakouts are happening, a good power electrical stock where a very big fund is it has this as its top holding. And from June, let me just see if I can show you to you here. बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड इसको ऐड करे जा रहा है बहुत टाइम से।
इससे ज्यादा पता नहीं चल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स में इसमें काफी एडिशन हो रहा है, ये आप देख ही सकते हैं ट्रेंड। बीएससी सेल, हिंद कॉपर सेल मैंने अभी डिस्कस किया था, अर्निंग्स आर गुड, फ्रेश रैली है स्टार्टेड, लेट्स सी हाउ इट गोस। बीएससी में अभी करेक्शन चल रहा है। अब ये यहाँ तक आ गए हैं तो इसको ये ले ही आएंगे इधर तक। अर्निंग्स आ रही है ना 5 अगस्त को, तो देखते हैं क्या होता है। हिंद कॉपर मेटल में कुछ नहीं हो रहा। हाँ जगमोहन जी, आथर एनर्जी में आप फंस चुके हैं, अब उसमें प्राइस करेक्शन हो रहा है, अब आप चुपचाप बैठे रहिए। आपने 1300 कुछ रुपए में लिया है, देखते हैं क्या होता है। This is just, let's see what earnings come up with. अर्निंग्स की क्या डेट होती है इसकी? 5 अगस्त को देखते हैं अर्निंग्स में क्या होता है। ठीक है, नाइस, बट दिस इज जस्ट टू फार अवे फ्रॉम रियलिटी, बहुत हाइप है इसमें। हिंद कॉपर्स कंप्लीटली कोलैप्स्ड, 200 डीएमए पे वापस आ गया। So that's it, ladies and gentlemen. We've discussed all that I had in mind. We'll call it time here, and we will again get back tomorrow. Friday, there is an office event in the evening, so I will not be doing a show.
But tomorrow we will get together and we will see Nifty safely past 24,300. If there are any questions, I'm happy to take. Otherwise, we'll call it time. Park Hotel. पार्क होटल का तो अभी आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले. अनिल जी, देयर इज नथिंग इन द स्टॉक. आईपीओ प्राइस के आपको नीचे मिल रहा है ये. 155 है ना. अभी क्या प्राइस चल रहा है? 121. यू शुड बी हैप्पी. So it goes on to prove that the best time to buy an Indian IPO is 2 years after the listing. सर ये जो listings है ना, ये they are done to provide exits to major shareholders at the cost of retail shareholders. फ्लैट सेल्स है, फॉलिंग प्रॉफिट है, क्या कीजिएगा आप? बट यू वांट टू बाय. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. आप क्यों खरीदना चाहते हैं पार्क होटल्स? ये देखिए, ये इसका सेल्स नंबर है. प्रॉफिट आधा हो गया है मार्च 2026 में वर्सेस मार्च 2025. उससे पहले 18 था.
उससे पहले 11 था। व्हाट इज जून? जून में तो लॉसेस आते हैं, देखिए sequentially June is the worst quarter. So if you are a value buyer and you have hope that Park Hotel में तकदीर बदल जाएगी, then you should get into it. Otherwise, I'm sure there are better options. See, you should buy, unless you're very sure, you should buy growing companies. वैल्यू में अगर आप फंस गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है सर. So let the top guys decide when value turns to growth. When value turns to growth, you see the maximum returns. But a lot of time value remains trapped. I'll give you an example. See, this stock I bought at 1100 rupees. I still have it. Force Motors. But for years, ये इससे भी पहले बहुत साल लिस्टेड रहा, इसने कुछ किया ही नहीं. 1100-1200 रुपए रहा ये 5 साल, बिकॉज दिस वॉज अ वैल्यू ट्रैप. बीएससी पर आपको और डेटा मिल जाएगा. फर्स्ट मोटर्स बीएसई इसमें है नहीं, बट ऑफ कोर्स दिस वैल्यू हैज एक्सप्लोडेड. एक की चीज 26 हो गई. बट दोज आर वेरी डिफरेंट इन्वेस्टर्स, दोज आर वेरी डिफरेंट लॉजिक्स कि क्यों खरीदा जाता है, कैसे खरीदा जाता है. So I don't think so you should get trapped into value. It's very difficult to get out of it. अब आज की सेवा समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल. ओके जी, टाइम टू बिड गुड बाय. जय हो आपकी.